अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तनवीर मैंने शेयर कर दिया इसको। आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर आबेल आपका है ना आज? आप जी मेरा है। ठीक है। स्टार्ट करूं मैं? हमारे साथ है बट सॉरी इसलिए मैंने नहीं किया था। तो सर थोड़ा सा बिजी है, सो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जितना हम लोगों के है नॉलेज, जीएम भी है, मैं भी हूँ, तो हम कनेक्ट करते हैं ये। ओके ठीक है, तो हम इसको जल्दी वाइंड अप करेंगे। अच्छा, so this is the scenario for you. 27-year-old male patient presented to us with complaints of lower backache for 1 year and bilateral lower limb weakness for 3 months. So this is the scenario with you. So now you have to take your history, focused history within 5 minutes. Should I start? Yes, yes. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आबेद है। मैं आपसे आपकी बीमारी की तशख़ीस से लेकर सवाल You will ask the पूछूंगी। question and you will ask the question from Dr. Tanveer. He will be friend of the patient or patient himself. जी तनवीर, तुम्हारी आवाज नहीं है। तनवीर की आवाज तो है पहले। तनवीर, तनवीर बोलो, अभी आवाज आएगी तुम्हारी। हाँ सही है। हाँ ठीक है, सो शी विल टेक हिस्ट्री फ्रॉम यू। सही है। ओके स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आबेद है। मैं आपकी बीमारी की तशख़ीस के लिए आपसे कुछ सवालात करूंगी। जी पूछिए। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? जी। कोई और बीमारी है? शुगर, ब्लड प्रेशर? नहीं, कुछ भी नहीं। आप काम क्या करते हैं? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। अच्छा, आपको ये जो 1 साल से कमर में दर्द हो रहा है उसके बारे में मुझे बताएं कि शुरू कहाँ से हुआ था, कमर के कौन से हिस्से में? शुरू तो मुझे कमर से हुआ था, कमर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहां से। और ये हर वक्त रहता था या कभी कभी होता था? नहीं, शुरू में जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम थोड़ा थोड़ा महसूस होता था, फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा तो बढ़ना शुरू हो गया। जी, जो दर्द है कोई ऐसी एक्टिविटी या ऐसा कोई काम है जो आप करते थे उस वक्त होता था? हेलो। जी जी बोलें। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जब शुरू में चलता था उस टाइम ज्यादा होता था, या रात के टाइम जब लेटता था उस टाइम ज्यादा होता था? अच्छा ठीक है, इसके मतलब शुरू में आपको कभी कभी होता था और फिर टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये आपको हर वक्त रहने लग गया? हाँ, उसके बाद फिर ज्यादातर होता ही था। और ये रात के टाइम बढ़ जाता था जब आप लेटते थे बेड पे? जी। अच्छा, ये जो कमर का दर्द है कमर में ही रहता है या कहीं और भी जाता है? शुरू में तो कमर में ही था, फिर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी जाना शुरू हो गया। नीचे कहाँ पे? शुरू में तो ये था कि कमर से निकल के पाँव में ऊपर तक आता था, घुटनों तक आता था, लेकिन उसके बाद फिर और जैसे टाइम लगा फिर बिल्कुल पाँव तक आना शुरू हो गया। और ये दोनों टांगों में जाता था या फिर सिर्फ एक टांग में? होता दोनों में, लेकिन दाईं टांग में ज्यादा है। ये किस तरह का दर्द था? दर्द ऐसा लगता था जैसे जल रहा हो ना, मेरे पाँव जल रहे हो, इस तरह से महसूस होता था, जलन टाइप का दर्द। शुरू ये ऊपर से हुआ था, उसके बाद घुटनों तक गया, उसके बाद फिर आपके पाँव तक जाना स्टार्ट हो? जी। अच्छा, ऐसा कोई काम था जो आप करते हो उसमें दर्द बढ़ जाता हो, जैसे अगर आप झुकते हो या वजन उठाते हो? चलने से और झुकने से बढ़ जाता था। और आपको कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी थी? नहीं, कोई चोट वगैरह नहीं लगी। वजन उठा लिया?
नहीं, वजन भी नहीं ऐसा उठाया कुछ। ये आपको रात को या किसी भी दिन के किसी भी टाइम साथ साथ बुखार वगैरह तो नहीं आता था? नहीं, बुखार नहीं आता। कि वजन कम हुआ है? नहीं, वजन भी कम नहीं हुआ। अच्छा, अब ये जो दर्द अब आपका बढ़ता गया है, उसकी वजह से आपको चलने फिरने में तकलीफ होती है? अब अपने मतलब काम कर सकते हैं जो दिन के काम होते हैं? शुरू में तो ये होता था, मुझे लगा जैसे मेरे पाँव बहुत वजनी हो गए ना, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये था, मैं चलते चलते गिरने लग जाता था। लेकिन अब तो काफी टाइम हो गया, मैं चल ही नहीं सकता, बिस्तर पर हूँ। और आपने दर्द के लिए कोई दवाइयाँ वगैरह ली थी? दर्द की दवाइयाँ दी थी डॉक्टर ने, उससे थोड़ी देर के दर्द कम हो जाता है। अब फिलहाल किसी दर्द की दवाई से कंट्रोल होता है दर्द? कंट्रोल तो नहीं, कम हो जाता है। अच्छा, सही। अब आपने ये भी बताया कि पिछले 3 महीने से आपकी टांगों में कमजोरी आना शुरू हुई है। ये कमजोरी अचानक से हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता हुई थी? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई थी कमजोरी। और ये दोनों टांगों में थी? जी, दोनों टांगों में। और पहले सीधी तरफ कमजोरी शुरू हुई थी या फिर उल्टी तरफ? तकरीबन एक जैसे महसूस होता, लेकिन दाईं तरफ ज्यादा महसूस होता। और आपको पता कैसे चला कि आपको कमजोरी हुई? आपने खुद नोटिस किया, घर वालों में से किसी ने बोला कि आप लड़खड़ा के चल रहे हैं? नहीं, मैं आपको बताया, जब मुझे चलता था तो मुझे पाँव उठाने में ऐसा लगता जैसे बहुत मसला हो रहा, पाँव ही नहीं उठते थे। चल रही है। अच्छा, तो ये कमजोरी आपके पाँव से शुरू हुई है या ऊपर से शुरू हुई है? नहीं, पाँव से शुरू हुई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आई थी। और इसके साथ साथ आपको पाँव में सुनपन महसूस होता है? थोड़ा थोड़ा सा महसूस होता है, इतना ज्यादा नहीं। पाँव में या पूरी टांग में? आ, ये घुटने से नीचे वाले हिस्से में। आप सपोर्ट के साथ चल सकते हैं या बिल्कुल नहीं चल पाते? नहीं, अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं चल पाता। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जब आप चलते हैं तो चलते आपके पाँव में से, जब पहले चलते थे तो पाँव से जूती वगैरह निकल जाए तो आपको पता चलता था? शुरू में ऐसा होता था कि पाँव मतलब उठता ही था, जूता भी निकल जाता था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको जो है पेशाब करने में कोई मसला होता है? नहीं, पेशाब वगैरह में कोई मसला नहीं। पेशाब बिल्कुल सही है? जी। रुक रुक के नहीं आता? नहीं। अच्छा, और पाखाना करने में भी कोई मसला नहीं है? नहीं, वो भी ठीक है। पेशाब की जगह सुन तो नहीं? नहीं, वो भी सुन नहीं है। अच्छा, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं कि आपकी पहले कभी किसी किस्म की कोई सर्जरी हुई हो? नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। अच्छा, कभी कोई शुआएं लगी हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके घर में किसी को टीबी वगैरह तो नहीं? नहीं, किसी को भी नहीं, ठीक। और आपके घर वालों में से किसी को कोई दिमाग का कोई मसला हो, कोई कैंसर हो किसी किस्म का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके जिस्म पे निशान वगैरह तो नहीं? नहीं। गुठलियां या निशान, या खानदान के नहीं। किसी और फर्द में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपका टाइम ऑलरेडी हो अच्छा, गया, आपको इसके 5 मिनट्स। आप 30 सेकंड्स और ले लें, आप कंप्लीट करें। ठीक है। अच्छा, आपको इसके अलावा और कोई तो मसला नहीं होता? सर में दर्द रहता हो या जो है आंखों में कोई मसला हो, कमजोरी हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको बाकी रोजमर्रा के काम करने में कोई मसला तो नहीं होता? बाजू में से मतलब चीजें उठाने में, चाय का कप उठाने में, कंघी करने में कोई मसला तो नहीं होता? नहीं, अभी मैं काम कर ही नहीं पाता ना, बस बेड पे लेटा होता हूँ। वही, आपके हाथों में भी तकलीफ है क्या? नहीं, हाथों में कोई तकलीफ नहीं। तो आप हाथ से सारे काम कर लेते हैं? जी। I'm done with my history. ओके, ठीक है। नाउ समराइज योर हिस्ट्री। So, a 27 years old male patient with no known comorbids. He presented with complaint of backache for 1 year, which started from the back and then was radiating in nature, radiating initially to the knees and then bilaterally to the soles of the feet. It was more prominent on the right side as compared to the left side. Initially, it was intermittent, but then it became progressively more severe and continuous with exacerbations. The pain was aggravated at night. Patient had history of severe nocturnal pain. The pain was burning in type with associated dysesthesias and paresthesias. And the patient also then developed weakness in the lower limbs for the past 3 months, which started distally and then progressed proximally. And initially he was complaining that he used to fall down while walking, and then it became more profound, and now he's unable to lift himself off the bed and do his daily activities. There's no history of any urinary incontinence,
There's no history of any urinary retention. He does not have any urinary complaints, and he does not have any history of TB contact. There's no history of weight loss. There's no history of any spots or nodules on the body, and there's no family history, significant family history. So, how do you take this patient? Sorry, I didn't understand what you said. I mean, what is your impression of this history? I'm thinking more along the lines of a neoplastic lesion involving the lower spine. So you will stick yourself only to the neoplastic lesions? I'm also thinking if the patient might have any disc herniation, but there's certain symptoms which are pointing more towards a neoplastic lesion. So where? But I will keep the disc in my differentials as well. On the basis of history, where are you localizing your lesion? At what level? In the lower spine, lower lumbar spine. Lower lumbar spine. Lumbar spine. Lumbar spine. With this weakness, and you since he's pointing more towards knee pain, I would like to think that the patient's lesion is somewhere around that level, around the L3 level. So it's not the lower lumbar, no? Mid lumbar. It's not the lower lumbar spine, but somewhere along the middle of the lumbar spine. So top of the list, you are saying that there might be a neoplastic lesion. Apart from neoplastic, what else? I'll also keep disc herniation in my differentials. Okay, and I'm not going to put anything infective because the patient does not have any history of any fever or any local pain. So I don't want to keep infections in my differentials. What are the features that are in favor of neoplastic one? What are the features which are favor neoplastic lesion? Yes. Okay, because the patient has, since usually spinal neoplastic lesions are benign, the patient's long-standing history of 1 year, and they started off with pain, and then it progressed to limb weakness of the patient has any intradural spinal tumor. That is how it usually presents. It presents with pain initially, and then with time, the patient develops limb weakness. Also, this patient does not have any history of trauma. He does not have any history of fever. There's no history of weight loss. So that also again points to a more neoplastic lesion. Okay. So what about this herniation? The patient is also okay. Say. I'm saying the patient is also complaining of nocturnal pain. Pain is more severe during night time. So that is classical of a spinal tumor. What is his sensory level? Is he intact for sensation or not? I'll localize the sensory level on the basis of my examination, but he did not say that. No, on the basis of history, you must have asked about history, no? He said there's no numbness. He said there's no numbness, and simply say he has intact sensations, the normal sensation according to the patient, no? Okay. So, और कुछ पूछना है? हिस्ट्री की वजह से अच्छा. What was your first question when you started taking history? My first question, I asked if the patient was married. So was it appropriate to ask directly about the matter? You could have asked the name of the patient or given something else to start with. I did not ask about the age because it's already mentioned, and I did not. Yes, but I should have started with the name. Yes. Okay. So how will you examine this patient? I'll start initially with looking at the general physical appearance of the patient. The patient is in front of you. Tell us how you are doing the examination. I'm starting with the general physical examination of the patient, and I'll initially look if the patient, what is the general appearance? The patient appears to be anemic. What is the general look of the patient? If there's any visible wasting of the muscles, the patient has any significant weight loss, that should be noted. I'll look for anemia, jaundice, clubbing. I'll also look for any prominent nodules or spots on the face, on the body.
And then I'll look for any areas of hyperpigmentation. And then I'll proceed with the general physical examination. I'll check the pulse of the patient. I'll check his blood pressure. And then I'll proceed to the spinal examination, in which I'll initially look at the general appearance of the patient, if there's any, how the patient is lying down, if there's any visible deformity, if there's any visible positional deformity, if there are any scars, if I can appreciate any fasciculations, and then I'll proceed with inspecting the upper and the lower limb. On inspection, I'll keep in mind to check the fasciculations to see if there are any cafe spots, if there are any dermal nodules, and then I'll proceed with checking the tone of the patient. For that, for the checking the tone of the upper limb of the patient, I'll grab the patient's hand, I'll then supinate and pronate the arm, and then I'll rotate the wrist, and then I'll rotate the shoulder joint as well to check the tone. And then I'll check the tone, I'll check the power of the upper limbs. And for that, I'll start initially with checking the abduction of the shoulder. I'll ask the patient to put his arms out in a 90 degrees position on both sides, and then I'll tell him that I'm going to press down and he has to press up on my hand. And then after that, I'll check for the wrist extension and I'll check for the elbow extension, the elbow flexion. I'll ask the patient to pull the arm towards his face while I give an opposite apply an opposite force on his forearm, and then I'll check the extension of the elbow by pressing on the dorsal aspect of the patient's forearm, and I'll ask him to push down. Then I'll check for the movement of the wrist. I'll ask the patient to bend his wrist towards his face, and then I'll check for the flexion. I'll check for the extension of the wrist joint by asking him to push down on my hand. I'll check for the extension of the fingers, and I'll extension of the fingers, the abduction of the thumb. And after completing the motor examination, I will proceed to check for the reflexes of the upper limb. I'll check for the biceps reflex. I'll check for the tricep reflex, the supinated reflex. I'll also then proceed, since the patient is giving history of a weakness of the lower limb. I will not do a proper complete examination of the hands if I want to do a specific scenario related examination. Then I'll move on to check the pronator drift of the patient. I'll check the pronator drift, I'll check the Hoffman sign to assess for any pyramidal involvement. And then I'll move on to check the motor system of the lower limb. I'll inspect the lower limb for any visible fasciculations and any wasting of the muscles of the feet, and then any pes cavus, any ankle drop. And afterwards, I'll start with examining the motor system. I'll check his tone first. I'll check the tone of both the limbs, and then I'll proceed with the motor examination, where I will ask the patient to lift his leg in a 90 degrees position. I'll tell him to move his knee towards his face, and then checking the flexion of the hip joint. And then I'll check extension of the hip joint by telling the patient to straighten out his leg and then push down on the bed. I'll place my hand on the ankle, and I'll tell him to push down on the bed to check for the extension of the hip joint. For flexion of the knee joint, I'll ask the patient to pull his leg towards himself, and I'll exert an opposite force. And for extension at the knee joint, I'll ask him to extend his knee while I keep the knee, extend his knee. And then I'll check for dorsiflexion of the foot. For that, I'll ask the patient to keep his toes pointed towards the ceiling and then push back on my hand, and I'll keep my hand on the dorsum of the foot. And for plantar flexion, I will keep my hand on the sole of the patient's foot and I'll ask him to press down. Then I'll individually check the dorsiflexion, the plantar flexion, the great toe. And after doing motor examination on both sides, I'll proceed with checking the reflexes of the patient. I'll check the knee reflex, I'll check the ankle reflex, and then I'll also check the patient. If the patient has exaggerated reflexes, I'll also check for clonus. And I'll check for the Babinski sign. I will do planters of the patient. And then when I'm done with the examination, I'll ask if the patient is able to stand with support. If he's able to stand with support, I will ask him to stand. And if he is able to walk with support, I'll also like to assess his gait. And if the patient is able
I'll also assess his gait. And if the patient is able to stand, I'll also tell him to close his eyes with his feet slightly apart. And then I'll tell him to close his eyes because I want to check the joint sense, joint and the proprioception. And I'll like to check the Romber's test. But that is if I see that the patient's power is intact on examination. And then I'll move on to sensory examination after checking the gait and the Rombergs. In sensory examination, I would like initially to start with vibration sense. For that, I'll take a tuning fork of 128 Hertz, and then I'll tell the patient, I'll give him a reference point. I will either on his chin or on the sternum. I'll tell him what the vibration would feel like to him, and then I will ask him to close his eyes, and then I'll start with the sensations distally and then more proximally. I'll initially put the tuning fork on the tips of the fingers, and then if the patient is able to perceive that, I'll then move on. Then I will not move more proximally, because that means that the position sense is more intact proximally. But if the patient is not able to feel the vibrations distally, then I'll move more proximally. I'll then place it on all the interphalangeal joints. I'll place the tuning fork on the metacarpal-interphalangeal joint, and the wrist joint, then at the elbow joint, and then at the deltoid tuberosity. And then I'll do the same on the feet. I'll check his vibration sense of the feet by initially placing the tuning fork on the tip of the toes, and then moving to the metatarsophalangeal joints, and then into the ankle joint, then the tibial tuberosity, and then the superior iliac crest. And then once I've ascertained the vibration sense of the patient, I'll move on with the position sense. I'll initially explain to the patient what I'm going to do. I'll tell him with his eyes open that this is how I'm going to move his toe or his finger in a vertical direction, and which direction is up and which direction is down. And once he has understood that, I'll tell him to close both his eyes, and then I'll perform the joint position sense by holding the fingers by the interphalangeal joints at 90 degrees to the direction, and then I'll move the finger up and down, and then I'll ask the patient if he's able to confirm which direction it is. And if he's able to confirm it, then I will not move on proximally. But if the patient has loss of position sense, I'll move on more proximally at the other major joints, at the elbow joint and the wrist joint, to see if the patient has joint position sense or not. And once I'm done with joint position and vibration sense, I'll start with pinprick, and I'll check different dermatomes of the body. I'll start initially with the upper limb. I'll tell the patient, I'll give him a reference point on the forehead and tell him, and this is how the pain would feel like. I'll use a needle and a neurological needle, and I'll tell the patient what the sharp end feels like, what the blunt end feels like. And I'm going to explain, I'm going to perform the pinprick test on all the major dermatomes of the upper limb as well as the lower limb. And I will look for any decreased sensations, and keeping in mind that the patient does complain of having paresthesias in the lower limb. And then I'll check for fine touch in the end. I'll use a cotton wool, and then I'll tell the patient what the fine touch will feel like by giving my reference point on his forehead once again. And once he has ascertained what it would feel like, I will proceed with doing the examination on both the upper limbs and the lower limbs and check all the major dermatomes. And after that, I'll also like to do the local examination of the spine as well as for spinal movements. This patient did not give me any history of saddle anesthesia or any urinary problems, but still I'll like to ask the examiner if I could check the sacral sensations. Okay, then are you done with the examination? No, and then after completing the spinal examination, I would also like to then proceed to do some relevant cranial examination as well, because if the patient has any gait disturbances, which I've noticed previously, I would also like to check for cerebellar signs in case I'm thinking of neurofibromas with any neurocutaneous disorder. So I'll check for the posterior fossa signs, I'll check for the cerebellar signs, I'll check for the pyramidal tract signs. And for that, should I go into detail of that as well? No, just complete your examination and give a summary because sir is with us now. So just give a brief summary of the patient. Of the history? Yes. Okay, so I have a 27-year-old male patient who presented to me with history of backache for 1 year and bilateral lower limb weakness for 3 months.
The backache started from the lower back region initially, and it was intermittent at first, but then with time it progressed, and now it is continuous continuous and severe in intensity. The backache is radicular in nature. It is radiating to both the lower limbs. Right side is more involved than the left side. Initially it was radiating to the knee, and now it has progressed to involve the soles of the feet as well. The pain is of burning type, severe in intensity, exaggerated on postural movements, and it is more severe during nighttime when the patient is lying down on the bed to rest. It was initially controlled by using pain medications, but now even the pain does not resolve even on taking pain medications. And the patient started having bilateral lower limb weakness 3 months back, and he noticed it when he was walking back home from some work, and then he fell down. So he noticed it that he was having clumsiness during walking, and then this weakness started distally, initially from the feet, and then it progressed more proximally, involving the knee and the hip as well. And now the patient cannot stand or walk. With the patient, according to him, cannot do any daily activities. He's usually lying down at home. And the patient was also saying that there's no history of trauma, there's no history of any associated fever, there's no history of TB contact. The patient does not have any history of weight loss, and he does not give any history of any urinary problems. He does not have any retention. He does not have any. What were your differential on the basis of your history? On the basis of my history, on the basis of my history, I'll put a neoplastic lesion on top, and then after that, I'm also thinking along the lines of any major intervertebral disc herniation, because it also presents like that. And I'm not looking for any infective etiology, because the patient does not give me any history of any infective lesion, any history which corresponds to having an infected lesion. Yes, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर. अभी आ रही है आवाज? Yes, sir. So what is your differential diagnosis? So on the basis of history, my differential would be to keep neoplastic lesion on top, and then I'm thinking of more of a degenerative type of disease, in which I'm thinking of a major disc herniation which is causing compression at the level of the lumbar spine. मैंने आपसे लेवल तो नहीं पूछा था, मैंने आपसे डिफरेंशियल पूछा था. Why you are telling me about the level? I'm thinking more about the neoplastic lesion. What do you mean by neoplastic lesion? Should I tell which neoplasms I'm suspecting? What you say that you are suspecting neoplastic lesion. What do you mean by neoplastic lesion? By neoplastic, I mean the patient is. I think the patient has probably any neoplastic lesion which is involving the nerve room, the dorsal nerve rooms, most probably intradural in nature, according to the history. So what is in favor of intradural? आप कह रहे हैं intradural in nature. ये extradural नहीं हो सकता? So extradural हो सकता है, but intradural इसलिए करिए because the patient is giving history of radicular pain, and radicular pain means radicular pain. So हो सकता है extradural हो सकता है, लेकिन most commonly extradural lesions में is metastasis आते हैं. The patient is young, so that's why I'm not thinking more along the lines of a METS, and the patient is not giving any history of any disease, any pathology which might metastasize, such as any prostate CA. So it does not have any urinary complaints. So that is probably why I'm not thinking of extradural, but I still have them in my differentials. So कौन सा lesion हो सकता है? It can be an intradural extramedullary lesion in which I'll keep a neurofibroma on top. It can also be a meningioma. And on intramedullary lesion, so how can you differentiate why it is not infective pathology? So because the patient did not give me any history of fever or any local pain. The patient did not have any pain during movements. उसको तो दर्द है, वो कह रहा है कि मुझे लो बैक है, तो किस तरह आप कह रहे लोकल पेन नहीं है? So low back
So why it is not infective pathology? Patient is not giving me any history of fever, and also because the patient did not give any history of pain during movement of the spine, and he's mostly focusing on bilateral lower limb pain, which is his major. In case it was infective etiology, the patient had a more severe history of local pain, and also because the patient did not have any history of TB contact. So why it is not carry spine? There is no history of TB contact initially. The तो patient बताएं not have आपने any. ना कि वो नहीं है टीबी कंटेक्ट कोई और चीज है जो कि बिल्कुल कन्विंसिंग हो कि यस यू हैव द कांसेप्ट. Sir, I didn't understand your question. Why it is not carry spine? Forget about the history of fever or any past or family history. So what should be the feature of carry spine which is not present in this patient? Okay, examination पे क्या था? Sir, examination पे findings. Positive finding बताइए. ये इसकी एग्जामिनेशन है. लोअर लिम्ब की पावर 3/5 है, एक्साइड 1/5 है, रिफ्लेक्स स्लगिश है, सेंसेशन इंटैक्ट है, राइट प्लांटर जो है ना ये डाउन गोइंग है. जी राइट नाउ लेफ्ट अप गोइंग क्या है अभी? लेफ्ट प्लांटर म्यूट है, अप गोइंग है. लेफ्ट म्यूट है, ये सब में लिखा हुआ है. बस इतनी फाइंडिंग दी हुई है, आप इनकी वजह से बताएं. Based on the examination findings, patient has appears to have. Did he have any wasting of the muscles? Patient's decreased in both limbs, and yes. So I would think that the lesion is involving mostly, based on the examination findings, I'll localize the lesion to be below the conus medullaris at the level of the chordae equina, because the patient has sluggish reflexes. And the planters at the right side are downgoing. Probably the patient is having some lower motor neuron signs on. So I'll possibly put the lesion below L. Patient में आप और क्या चीज देखेंगी कि that we might differentiate whether the lesion is in the at the chordae equina level or it is at the conus level? कोई और चीज आप इसमें देखना चाहेंगी? Based on the examination findings, so I'll check for reflexes in these patients. की बात हो रही है ना? जी sir. So how can you differentiate में और chordae equina की reflex में क्या फर्क होगा? Medullaris has usually the patient presents with hyperreflexia because it is an upper motor neuron lesion. We have an upgoing planters. That patient, the bulbocavernosus reflex is also present, and then the patient will have signs of upper motor neuron. The patient will have increased tone. Patient will have spasticity as compared to chordae equina, where the patient presents with flaccid paralysis. The patient ये बताएं कि it will have a ये जो लीजन है, upper motor neuron and lower motor neuron cells. ये जो पेशेंट है, इस पेशेंट में इस सामने जो फाइंडिंग लग रही है ना, तो क्या व्हाट इज योर डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस? So based on these findings, I would keep the patient to have an intradural extramedullary lesion because the power is involved, and in intramedullary lesions, power involvement is late. The patient also appears. देखिए आपके सामने जो फाइंडिंग्स हैं इसकी बेस पे व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस? जी My top differential would be a neurofibroma, and then I'll put meningioma. न्यूरोफाइब्रोमा या मेनिंजियोमा, दैट इज पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस. तो आपको डायरेक्ट पता चल गया कि ये न्यूरोफाइब्रोमा है? No, so I'll keep neoplastic lesion on top, which is intradural extramedullary. मैं कह रहा हूँ कि इसको मेट्स है, तो फिर आप क्या कहेंगे इसमें, क्यों है और क्यों नहीं है? Mets, because
The patient is a young patient. He is a young patient, and the history is long-standing. And also because the patient did not give me any history of any systemic signs, such as any, if I'm suspecting prostate, which is the most common metastatic lesion here, the patient did not give me any signs of any urinary problems. So based on that, I will not keep metastasis as my top diagnosis. Also, examination, how can you differentiate? So METs might present spinal tenderness. Why it is Carey spine? Why it is not Carey's? Why it is not Carey's? It's not Carey's because there's no spinal tenderness, and also because usually apart from that, I don't know. Okay. So again, what investigation you will do? Spinal examination, there is no deformity mentioned over here. So if the patient had Carey spine, I would usually look for any kyphotic deformities. What investigation you will do in this patient? I'll start with baselines, specific and random examination. On baselines, I would check for CBC, UC, PTNR, as well as chest X-ray of the patient. And on specific examination, I would like to do MRI whole spine with and without contrast. And I'll also like to do in this patient a CT scan CT scan of the spine as well. I'd like to do ESR and CRP. आप CRP क्यों करना चाहते हो? CT scan क्यों करना चाहते हो? अच्छा, sir, I'll CRP to rule out if there's any infective pathology. For that, I'll like to do a CRP, and also because CRP is increased in certain आप तो कह रहे हैं malignancies. infection नहीं है. आप तो कह रहे हैं infection है नहीं, तो फिर आप CRP क्यों कर रही हैं? The CRP is also raised in certain tumors as well. So that. Like कौन सी ट्यूमर में रेज होता है? सर मुझे नहीं पता. ओके, आपने का CT स्कैन आप करना चाहते, तो जब MRI आपने किया, CT स्कैन क्यों करना चाहते हैं? Hello. What is in your mind? CT scan आप कह रहे हैं कि आपने I'd like to do a CT scan for two reasons. Initially, because if I'm suspecting it to be a neurofibroma, I'd like to check the foramina, the intervertebral foramina in which the nerve, and if there's any widening of the foramina, and also to plan my approach. The intervertebral foramina is very clearly seen by MRI. और आपको बिल्कुल वो डम्बल सब कुछ बता देगा, तो CT स्कैन क्यों करना है आपने? ओके, और क्या इन्वेस्टिगेशन का है इरादा? What other investigation you will do in this patient? और क्या investigation करेंगे आप? I'll also like to CT brain of the patient as well, just to rule out if the patient has any neurocutaneous disorders which might involve the brain as well, and if the patient has any tumors which can disseminate via the CSF. Neurocutaneous disorders जो है ना, न्यूरोकुटेनस डिसऑर्डर्स तो आपको नजर आते हैं. कुटेनस का मतलब है कि सामने आपको चीजें नजर आएंगी, कोई डिस्कलरेशन वगैरह, तो CT स्कैन में किस तरह नजर आएगा? So CT scan, I'm just going to check if the patient has any lesion of the brain as well. What lesion? If I'm suspecting it to be a neurocutaneous syndrome, on the basis of MRI, then I'll see if the patient has any vestibular schwannomas, meningiomas, or any associated brain tumors. Meningioma of which region? Posterior fossa. फोसा के लिए CT स्कैन करेंगे या MRI करेंगे आप? So ideally MRI करवाना चाहिए, but if the patient is not giving me any history of headaches or any other things, and just for the screening purposes, I was thinking of going for a CT scan. Okay, और कोई इन्वेस्टिगेशन इसमें आप करना चाहेंगे? सर आपकी आवाज कट हो रही है. Any other investigation would you like to do in this patient? No sir. अभी आपने before showing you the images,
Can you tell me about differential diagnosis now? आपने तो एक ट्यूमर बता दी, कोई और चीज आपके जहन में है ट्यूमर के अलावा? Sir, I'm also thinking of a herniated disc. Okay, so when you are thinking about any herniated disc, तो how can we differentiate कि herniated disc होगा या कोई ट्यूमर है? क्लिनिकली कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? Clinically, the patient will, if I'm talking on basis of history, the patient will give any history of weightlifting, and the patient will. Hello. Okay, इसको जरा दिखाओ, इन्वेस्टिगेशन दिखाएं जरा उसको. वो इन्वेस्टिगेशन दिखाएं फरूक. जी सर, ये दिखाएं जरा. कैन यू सी इट डॉक्टर आबिल, आप नजर आ रही? जी 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 नजर आ रही. तो आप डिस्क्राइब करें ना फाइंडिंग. जी, this is Okay, so MRI ये है, आप बताएं. dorsal lumbar MRI dorsal lumbar spine of the patient, which is showing hypointense. This is the T1 weighted image, sagittal view, which is showing a hypointense lesion at the level of L2, starting from the level of L2 and extending till the level of S1 vertebra, which is hypointense, and it is causing fusiform enlargement of the cord. The intervertebral disc of the L1, L2 vertebra appears to be degenerated. There's narrow disc space at the L1, L2 level, as well as there's scalloping of the anteriorly of the body of the vertebra. And on the T2 weighted image, there's redemonstration of the same lesion, which is appearing now hypointense, with surrounding hyperintense signals, also extending from the level of the L2 vertebra, superior border of the L2 vertebra, and extending down to the S1 vertebra. Okay, so क्या, what is your diagnosis now? What is your differential diagnosis now? My differential diagnosis would be a neoplastic lesion of the cord, and to see if the patient has intramedullary or extramedullary, I would like to see the axial cuts. क्या लीजन है आपके ख्याल में? जी sir. What is your diagnosis? Based on this, I would keep a neurofibroma on top. But if I want to rule out the intramedullary lesions, I would like to see why the axial neurofibroma cuts. on top? आपने top पे neurofibroma रखा क्यों? So because if I'm thinking of extra medullary intradural tumors, I have not thinking of ये MRI आपके सामने है, आपने इस बेस पे डिस्कशन करनी है. आपने MRI को देख लिया तो आप कह रहे हैं टॉप पे आप neurofibroma रख रहे हैं, क्यों? So because this is involving the roots, the cordoequinous segment, and they're just playing the roots apart, and it is appearing hypointense. क्या T2 पे हाई क्या कहते हैं आपको न्यूरोफाइब्रोमा हाइपर इंटेंस नजर आएगा? नहीं सर. और इमेजेस चाहिए किस तरह इसी पे बस फाइनल करें? नहीं सर, I want to see more images. जी, आप मांगिए ना. Can I see the axial cuts, please? दिखाएं इसको, बाकी कट्स दिखाएं. जी सर, एक तो सर ये है T2 वेटेड ये है, और इसके अलावा क्या चाहिए आपको? Contrast. ओके. जी आप बताएं आप. This is a T2 weighted image axial cut of the lumbar spine, which is showing a hyperintense lesion. ये T2 लग which रहा is है आपको? involving. मुझे contrast नजर नहीं आ रहा. ये आपको T2 कैसा लग रहा है बताएं? नहीं, मुझे अभी फिल्म्स मिली, मेरे पास T2 वाला ही आ रहा था. जी आप इसको डिस्क्राइब करें, जो आपके सामने है उसको बताएं ना. अच्छा,
This is the sagittal view of the dorsal lumbar spine contrast, which is showing a lesion at the level of the L2 extending till L4, which is heterogeneously contrast enhancing with areas of possible necrosis in the center. And this lesion is extending into the right intervertebral foramina. And it is associated with widening of the foramina. अभी आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बन रहा है? मेरा डिफरेंशियल न्यूरोफाइब्रोमा ही बन रहा है. डिफरेंशियल का मतलब है कि आपने और भी तो दैट इज द फाइनल डायग्नोसिस. अगर आप एक बताने हैं तो आपका डिफरेंशियल का मतलब है कि आपने कुछ और भी बताने साथ साथ. जी, this क्या can आपके be जहन में है? neurofibroma. It can also be meningioma because it is contrast enhancing. The patient, I'm not able to properly appreciate if the lesion is intramedullary or extramedullary. So if I'll also keep ependymoma on my differentials as well. Okay, so what you will do with this patient? Initially, I'll admit the patient, and since after counseling the patient, I'll tell the attendants about the nature of the lesion and tell them I'll counsel the patients regarding the lesion and tell them what our management plan for this patient would be. And then if the attendants give consent, I'll tell them about the possible surgical approaches, the surgical management that we want to do in this patient. And in this patient, I would like to go for a posterior approach to go for excision or debulking of the lesion. Should I proceed with the surgical steps? How you will operate in this patient? Operation कैसे करेंगे? After putting the patient in the prone position, I will localize the lesion using either surface landmarks or C-arm. And after properly draping the patient, I would also like to use SSEPs and MBPs in this patient. But the patient, since he already has lower limb weakness, those are not very much reliable. However, I would still like to take a baseline MEP before starting my surgery, and then I'll plan my incision, a vertical midline incision. After giving the incision to the patient and incising subcutaneous tissue, I'll incise the dissector muscles in the midline and expose the spinous processes, and then I'll continue the dissection laterally to expose the laminae. And after that, I'll go for posterior decompression of the lesion. After doing laminectomy of the patient at the level of the L2 and L3, I'll open the dura, and then I'll localize, if I'm able to localize the lesion, I'll start with taking biopsy of the lesion and then internal decompression initially, if I can properly localize the lesion. And if there's a cleavage plane, I'll like to do a total excision of the lesion. And if the cleavage plane is not, if I cannot find a proper cleavage plane, I'd also, then I'll just take biopsy of the lesion. Since this tumor is also extending into the vertebral foramina. मुझे ये बताएं कि इसमें क्लीवेज आपको कहाँ, किस चीज से क्लीवेज मिलनी चाहिए? Like a nerve roots and between the tumor and the nerve roots. If I can easily identify the tumor from the normal nerve roots, then I'll proceed with total excision of the lesion. यहाँ कहीं पे आप अप्रिशिएट कर सकती हैं नॉर्मल नर्व रूट्स या जो है कुछ आपको नजर आ रहा है स्कैन्स के ऊपर? नहीं, तो बहन नहीं, यही तो पूछ रहे हैं सर बार बार. ये बताइए कि इस पेशेंट में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? Post-op, the patient there can be worsening of his motor symptoms. The patient can develop CSF leak. He can develop infection. There's risk of any urinary incontinence or urinary dysfunction following the surgery. The patient can also, since the lesions involving the intervertebral foramina as well, and if the patient can have persistent radicular pain post-op.
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है सर। Okay, so who will comment on her performance? डॉक्टर शाकिर उल हैं सर, अगर वो कुछ ऐड। शाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. Sir, I would like to comment some point regarding the history. So her history was good, but it has some deficiency, and she should work on the history. Other is the examination. So in the Okay, examination, so Shakir sir, you should comment on the shortcomings जो उसमें है, जो उसको mention करने चाहिए, या आपको लगा कि she should have also mentioned about these points. So you should please complete those points. yes, sir. Sir, she should mention regarding the infectious, that the fever, and other is the excruciating pain, which is very important in the infectious lesion. So she should ask regarding the excruciating pain. And other is the she was focusing on the tumor, and already that was in her mind that the lesion is there. So most probably she knows the case when she was taking the history. It was looking to me that at the end. And the history, she should focus on the weakness and how much the weakness, and the sensation and how much the sensation. And she should mention regarding the sphincter function. So that was main deficiency in her history. Yes. कोई और इस पे बात करना चाहते हैं? फहद या कोई बंदा हो? अस्सलाम वालेकुम सर। यस सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हिस्ट्री में हम पूछेंगे कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन का भी इसके पूछेंगे, इसके मुतालिक पूछेंगे कि आपके टांगों में अकड़ाहट वगैरह तो नहीं आई, और लोअर मोटर न्यूरॉन का हम इसमें पूछेंगे, जैसे कि टांगों का जो गोश्त है वो कम तो नहीं हुआ, उसमें खुद से तरतराहट तो नहीं आती। तो हम इस बेस पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हिस्ट्री में हम अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन का इसके साथ साथ जरूर पूछेंगे। और इसके अलावा उन्होंने सैडल एनेस्थीसिया का हिस्ट्री में नहीं पूछा। इसके अलावा सर हम कंजेनिटल के बारे में पूछेंगे कि ऐसे कोई पैदाइशी कमर में कोई टेढ़ापन तो नहीं है, या कोई जिस्म पे दाग धब्बे तो नहीं है, तो ये भी हम इसमें पूछ सकते हैं। बाकी इनकी हिस्ट्री अच्छी थी, लेकिन ये अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन्स का इन्होंने नहीं पूछा। और इसके अलावा उन्होंने सेंसेशंस का बिल्कुल नहीं पूछा। हम इसमें पूछेंगे कि आपको या इन्होंने क्लॉडिकेशन का भी नहीं पूछा कि चलते चलते उन्होंने वो भी नहीं पूछा। इसके अलावा उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप चलते चलते आपके पाँव का जो रंग है वो पीला तो नहीं पड़ जाता, वो भी हम इसमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा इनकी हिस्ट्री बाकी कंप्लीट थी। एग्जामिनेशन में पहले यस सर। सर आई जस्ट वांटेड टू ऐड जी sir, sorry sir, I just wanted to add, just to streamline, when there is ever a case of low back pain, so we just pay attention to red flags first, and for that we can see there are 4 things that we have to rule out in the history. So I've just created a mnemonic for this. See if it Cauda syndrome, there is a fracture or trauma, for example, infection, and malignancy or tumor. So in this, the history should concentrate on ruling out these 4 problems first, which are called the red flags. So for example, if there are any extremes of age, for in this patient, the patient is a 27-year-old male. So we have to rule out, so we focus, for example, for tumor, we ask previous history of tumor, any history of tumor in the family. For infection, we should ascertain whether there is any case of IV drug abuse, any use of steroids, immunosuppression, organ transplantation, any frontal or skin infection on the back. For the tumor and the prolonged use of steroids. For fracture, if this is a young male, we should ask for any history of heavy weightlifting or any particular trauma, as such any sports contact injury. And for Cauda syndrome, we all know that we should ask for any recent developed urinary retention, saddle anesthesia, motor weakness, or the sluggish or decreased deep tendon reflexes. So if we can rule out these red flags, then we can proceed for other questions.
ये बिल्कुल यस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिफ्लेक्स जो क्वेश्चन है ना, ये आप किसी भी ये मुख्तलिफ बुक्स में मिलती है ना, ये अपने पास लिख लें। स्पाइन में मैं बताऊं, जिस बंदे का लॉन्ग स्पाइन आता है तो देयर आर 80% चांसेस कि ये पास हो जाएगा। लेकिन जिस तरह 80% चांसेस पास होने की, मैं बताऊं वाइवा में 80% चांसेस है कि वो फेल भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि उसने पूछ लिया, अगर वो ना पूछ ले तो देन ही विल बी इन ट्रबल, ही और शी विल बी इन ट्रबल। जो रेड फ्लैग्स के पॉइंट्स है, जिस तरह फहद ने बता दिया, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी बैक हो उसमें कुछ चीजें या पेन हो स्पाइन का, वन इज नक्टर्नल पेन है कि नहीं है उसको, यानी ऐसा तो नहीं है कि रात को 2 बजे 3 बजे वो दर्द की वजह से उठ जाता है, फिर जब बैठता है तो उसका दर्द ठीक हो जाता है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि ये जो दर्द है ये रेस्टिंग कंडीशन में होता है कि नहीं। अगर कोई दर्द रेस्ट में भी हो, दैट इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग, वी शुड बी वरीड अबाउट दैट। मेडिकेशंस के साथ भी अगर दर्द ठीक नहीं हो रहा, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और फिर जो बाकी पॉइंट्स है, रेडिएशन वगैरह, स्पाइन में हम अक्सर जो है ना, यानी हमारे वार्ड के जो सिस्टर हैं, जो स्टाफ नर्स हैं, हेड, उसको भी पता, अक्सर राउंड में हम उससे पूछते हैं कि भाई मरीज में क्या देखते हैं। तो देयर आर 3-4 थिंग्स। स्पाइन है, स्फिंक्टर्स है और लिम्स है। स्पाइन से रिलेटेड चीज़ें पूछ ली, पेन है, पेन को पूरा एलाबोरेट कर ले। और लिम्स में यानी मोटर सिस्टम है, सेंसरी सिस्टम है, तो दोनों से क्वेश्चन करें। अगर आपने सेंसेशन छोड़ दी, इसका मतलब है कि आपने आधे लिम्स की क्वेश्चन कर ली। मोटर और सेंसरी, जिस तरह शफकत साहब ने बताया कि अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन से रिलेटेड क्वेश्चन, यस यू शुड हैव दिस क्वेश्चन, क्योंकि आप हिस्ट्री बेस्ड भी अपर और लोअर में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि भाई आया हिस्ट्री अपर की तरफ जा रही है, लोअर की तरफ जा रही है। और स्फिंक्टर्स के बारे में तो अगर पेशेंट चलता फिरता जो भी हो, आपने हमेशा स्फिंक्टर्स के बारे में पूछना है। स्पाइन में 3-4 डिजीज जो एग्जाम में रखे जाते हैं और जिसपे क्वेश्चन आते हैं, या तो मेट्स होगा या कैरीज, हमारे मुल्क में कैरीज काफी कॉमन है, या डिजेनरेटिव डिजीज में डिस्क या स्टेनोसिस होगी, या स्पाइनल ट्यूमर्स होंगी जिसमें इंट्राड्यूरल, इंट्रामेडुलरी या इंट्राड्यूरल एक्स्ट्रामेडुलरी, 4-5 चीजें हैं। जनरल और ट्रॉमा का तो उस साइड पे रख लें, उसका भी आपने पूछना है। तो वी शुड नो कि स्पाइनल ट्यूमर, मेट्स, कैरीज और डिजेनरेटिव, ये 4-5 चीजें हैं, इनकी हिस्ट्री में क्या डिफरेंट होगा। ये तो बिल्कुल आप लोग टेबल्स बना लें। और मैं बताऊं, स्पाइनल लीजन का, चाहे वो ट्यूमर हो, चाहे वो डिजेनरेशन हो, चाहे वो इन्फेक्शन हो, वाइवा तकरीबन मिलता जुलता है। और हर एक ये 4-5 चीजें मैं सबका पूछते हैं। वी शुड नो हाउ टू डिफरेंशिएट अमंग ऑल दिस 5-6 थिंग्स। हिस्ट्री पे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और एग्जामिनेशन पे किस तरह डिफरेंशिएट होगा। अब एक पेशेंट उसकी लंबी हिस्ट्री है साल से, तो आप इसमें मिट्स और इन्फेक्शन निकाल सकते हैं। फिर पेन की बात आ रही है, अगर उसका एक्सक्रूशिएटिंग पेन है, बिल्कुल वो बंदा सांस लेते हुए भी चीखता है, इन्फेक्शन की तरफ जाता है। तो इस तरह करोड़ लेने से पेन है तो वो अक्यूट डिस्क भी हो सकते हैं और इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। इस तरह पेशेंट है, वो रात को सोया होता है और आधी रात को उठ जाता है दर्द से। स्पाइनल ट्यूमर का सोच लें, एक पेशेंट है, उसका बैक पेन है और पूरा रेडिएट करता है, इंटीरियरली आता है, तो वही आपको रूट्स इन्वॉल्वमेंट है। तो जो पेन के नेचर्स हैं, क्या कहते हैं, जो डिफरेंस ऑफ दिस 4-5 डिजीज, इसको बिल्कुल आप लोग मुख्तलिफ बुक्स देख लें और एक पॉइंट्स बना लें कि भाई बैक पेशेंट में, चाहे वो अपर डॉर्सल का हो, चाहे सर्वाइकल का हो, चाहे वो लंबर का हो, मैंने ये क्वेश्चंस करने हैं और एक 5-6 चीजें मेरे जहन में है। या डिजनरेशन है डिस्क, या स्टेनोसिस है डिजनरेशन से, या स्पाइनल ट्यूमर्स है, या मेट्स है, या कैरीज है। तो मैं पेन के बारे में अगर मैं हर को एक्सक्लूड करता जाऊँ, इंक्लूड करता जाऊँ, तो व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच आई शुड आस्क। बिल्कुल एक टेबल बना लिया और अपने लिए बस हर पेशेंट को अप्लाई करें। जो भी पेशेंट दर्द के साथ आ जाए, बैक के साथ या नेक पेन के साथ, बस सबसे वही क्वेश्चन पूछ लें। दौड़ा दौड़ा आपके जहन में अपने खाका बनाए हैं और उसको बिल्कुल रटा कर लें। द सेम इज, और इसमें आपके जहन में अगर 2 चीजें हैं कि आपने मेड्स या केयर्स के बारे में पूछे, तो उससे रिलेवेंट सिस्टम एग्जाम पॉइंट जरूर पूछ लें। अगर आपके जहन में मेड्स हैं तो आप थायराइड से पूछ लिए, आप चेस्ट से पूछ लिए, आप बाउल से पूछ लिए, आप यूरिन और जो बाउल से उसमें कोई ब्लड वगैरह का पूछ लिए। इवन अगर आपका जहन में आपकी कैरीज हैं तो आप जी सर, आपकी आवाज कट रही है सर।
आप लोग वेट करें सर, ज्वाइन बैक करेंगे तो। तक और ये ज्वाइन। जी सर। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, अब आ रही है सर। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, अभी आ रही है आवाज सर। तो ये जो 5-6 पॉइंट्स लीजन है, जो डिजीज उसके मुतालिक आपने हिस्ट्री पूछनी है। देन कमिंग टू द एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन में वही चीजें हैं। स्पाइन है, लिम्स है, स्फिंक्टर्स है। स्फिंक्टर्स का तो आपने पूछ लिया, वी शुड नॉट एग्जामिन फॉर स्फिंक्टर्स। अगर आपसे पूछते तो किस तरह एग्जामिन करेंगे, तो यू शुड टेल। उसमें अब बैक पे इंस्पेक्शन पाल्पेशन करें। इंस्पेक्शन में देख ले कि इफ देयर इज एनी डिफॉर्मिटी, डिस्कलरेशन, एनी डिस्चार्ज, और पार्टिसिपेट करें। मूवमेंट के साथ भी करें कि मूवमेंट कैसी है, और उसमें आप जो है ना बिल्कुल यानी उसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन करा दें, और आप टेंडरनेस देखें। अब टेंडरनेस कैन डिफरेंशिएट, अगर टेंडर है तो या मेड से कैरीज, अगर नहीं है तो ये दो चीजें निकल गई। फिर लिम्स पे आ जाए, तो लिम्स पे अपने मोटर्स और जो सेंसरी सिस्टम दोनों देखने हैं। सेंसरी लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर वो पूछते हैं कि भाई आप सेंसरी लेवल कैसे मालूम करेंगे, तो उस और उसका जो है ना रिलेशनशिप विद द लीजन साइट और लोकेशन और लेवल का किस तरह है, ये क्वेश्चन 100% पूछते हैं। फिर रिफ्लेक्सेस हैं, आपको बिल्कुल आपके जहन में खाका होना चाहिए, और आपका इस तरह तेज रिफ्लेक्सेस होने चाहिए कि बिल्कुल आपसे कोई चीज मिस ना हो जाए। मोटर सिस्टम शुरू करें इंस्पेक्शन पे, फिर पाल्पेशन पे, पूरा जो है ना आप उसकी सारी चीजें देख लें। और आपने सिस्टम एग्जामिनेशन करनी है विद रेफरेंस ऑफ दिस डिजीज। अगर आपके जहन में मेट्स और वो है क्या कहते हैं केरीज है, तो आप सिस्टम भी कर लें। तो स्पाइन में बेहतर है कि आप पहले स्पाइन कर लें, उसके बाद फिर आप क्रेनियल की तरफ जाएं। ऐसा भी नहीं है कि आपने स्पाइन एग्जामिनेशन किया और आपने छोड़ दिया, आपने कोई न क्रेनियल नोट्स की ना आपने कुछ नहीं किया। आपने एग्जामिनेशन पूरी करनी है, लेकिन आपके पास दो सिस्टम है, वेदर द पेशेंट विल बी आइदर हैविंग क्रेनियल लीजन और स्पाइनल। जो लीजन है आपने उधर से एग्जामिनेशन स्टार्ट करनी है, ताकि आखिर में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये 5-6 चीजें जो है, मेट्स हैं, केरीज हैं, स्पाइनल ट्यूमर्स हैं, कंजेनिटल है और डिजेनरेटिव है। आपको हिस्ट्री एग्जामिनेशन, ये दो चीजें जो है ना, इन्हें इन पांचों के बीच में पूरा टेबल बना ले, और आप पता करें कि किस तरह मुझे क्या देखना है और क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। अगर वहां पे आप गलत भी बोले, इन्हें गलत भी कर ले, आप डायग्नोसिस बिल्कुल जरूरी है कि बिल्कुल ठीक हो। आपकी डायग्नोसिस ये एग्जैक्ट नहीं का बिल्कुल न्यूरोफाइब्रोमा तक हो, नो। आपने जस्टिफाई सही किया, आप चीजें सही बता रहे हैं, आपने मेट्स को सही तरीके से एक्सक्लूड और इंक्लूड कर सकते हैं, आप केरिस को सही तरीके से एक्सक्लूड और इंक्लूड कर सकते हैं। आपको हर डिजीज की इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के पॉइंट्स आपको फिंगर टिप्स में आने चाहिए, फिर आप आसानी से निकल सकते हैं। फिर कुछ नहीं है, फिर वाई में बाकी गलती भी हो जाए तो आपकी गलती माफ की जाती है। लेकिन मेन डिस्कशन जो होती है क्लिनिकली, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट, how can we differentiate caries from MITS, how can we differentiate caries from disc, how can we differentiate caries from spinal tumors. So we should know about the different points which are in favor of these diseases, which are against the disease, which might be present or which must not be present in a patient. उसके बाद कितनी डिस्कशन जब होती है, फिर सर एग्जामिनर आते हैं, मुझे एमआरआई दिखा था। जी सर दिखा। इन्वेस्टिगेशन पे जब भी बात आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, दिखाई जरा एमआरआई।
अगर इसमें आप देख ले, मैंने एक क्वेश्चन आपसे किया कि भाई कार्डियक वाइना और कोनस में अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन को, यार कोनस का लीजिए कार्डियक वाइना क्या है, तो आपने कार्डियक वाइना में मिक्स्ड फाइंडिंग्स होंगी, कोई रिफ्लेक्स एग्जैजरेट होगा, कोई एग्जैजरेट नहीं होंगे, लेकिन इसमें आपने नी जर्क और एंकल जर्क दोनों पे कंसंट्रेट करना है। कार्डियक वाइना में दोनों में कैसे फर्क करेंगे? कार्डियक वाइना में ये नी और एंकल दोनों जाएंगे ना, लेकिन जो कोनस है उसमें सिर्फ एंकल जाएंगी, नी वाले होंगी। इस तरह है ना, जी सर। एक टेबल है जी सर, नीज पे यस सर, यस। ये हमने किसी एग्जाम में दिया, आई डोंट रिमेंबर, मेरे ख्याल में पेपर सर एक मतलब आ भी चुका है सर, हमारे पास थ्योरी में आया था आपको पॉइंट्स को पता होना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन में क्लियर करो, बता रहे हैं कि जी जी सर। फिर तो हमारी बुक में भी मैंने दिया आपसे हुआ है पूछा सर। सीटी स्कैन क्यों करेंगे, तो आपको बिल्कुल पता नहीं था। भाई सीटी स्कैन आप ना अगर आपने मेंशन किया तो आप बताइए कि भाई मैं बोन पैथोलॉजी देखना चाहती हूँ, बोन की इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, शायद मुझे अगर बाद में कोई, अगर मैं ऑपरेट करूँ इंस्टेबिलिटी हो जाए तो आई शुड नो अबाउट द बोन कि भाई मुझे अगर फिक्सेशन करनी है तो मुझे पेडिकल और सब चीज़ पता होना चाहिए। आप जो भी बोले आपको जस्टिफाई करना चाहिए। इसमें जो है ना, अगर आपके जहन में न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस है तो आप पूरे स्पाइन का और ब्रेन का एमआरआई कर ले, बाकी जो इन्वेस्टिगेशन वो भी कर ले। जो चीज आपके जहन में है और आपने बोला है तो आप जस्टिफाई कर ले, ठीक है। इसमें जो है ना, अगर आप डिफरेंशियल बोले तो इसमें आपके दो डिफरेंशियल बनते बड़े बड़े। एक जो है ना न्यूरोफाइब्रोमा बिकॉज ऑफ द एक्सियल कट, अगर एक्सियल कट नहीं है तो फिर न्यूरोफाइब्रोमा आप नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें डम्बेल और बाहर की तरफ आ रहा है ना। और दूसरा जो है ना क्या है, मैक्सिलोपेपिलरी एपेंडिमोमा। अब एपेंडिमोमा बोले सेकंड डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि भाई which type of ependymoma, तो मैक्सिलोपेपिलरी। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द, हाउ कैन यू क्लासिफाई एपेंडाइमोमास। सब चीज आपको होनी चाहिए। जब भी आप स्पाइनल ट्यूमर ऑपरेट करो या कोई भी करो, उसमें काउंसलिंग करेंगे। और काउंसलिंग क्या है, मरीज को पता है लोअर लिम्ब की वीकनेस और स्फिंक्टर से कंसर्न है, आपने इन दोनों से रिलेटेड उसमें काउंसलिंग करनी है। सर जब ऑपरेट करो तो इसकी मॉनिटरिंग जो है ना, यानी पेशेंट ऑलरेडी वीक है, इसकी पावर 1 है और 3 है, तो उसमें आपको मॉनिटरिंग इतनी ज्यादा हेल्प नहीं करेगी, लेकिन आपको मॉनिटरिंग बतानी है। तो मॉनिटरिंग में क्या करेंगे आप लोग? मॉनिटरिंग में पहले आप पेशेंट का बिफोर सर्जिकल इंटरवेंशन आप उसकी मॉनिटरिंग कर लो, ताकि आपके पास रेफरेंस पॉइंट हो। क्योंकि इसमें अगर आप शुरू में मॉनिटरिंग देखे नहीं है बेस्ट लाइन इसका, और आप डायरेक्ट करें तो उसका तो पावर 1/5 इसको तो कम आएगा। तो आप कहेंगे भाई फिर आप यू विल नॉट बी एबल टू प्रोसीड फर्दर। तो आपने पहले इसको करना है, देखना है कि आपने प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले आप एक बेस्ट लाइन मॉनिटरिंग का ले लिया और आपने उसी के साथ कंपेयर करनी बाकी मॉनिटरिंग। इसमें लेवल की आइडेंटिफिकेशन है। इसमें अक्सर पूछते हैं कि भाई आपने लेमिनेटोमी की बट यू आर नॉट श्योर कि भाई ये लीजन नीचे कहाँ पे है, व्हाट यू विल डू, आपसे अल्ट्रासाउंड मांग रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अल्ट्रासाउंड का रोल है, इसमें सियाम का है, इसमें माइक्रोस्कोप है, इसमें कूज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चीजें सारी जो रिलेवेंट चीज आप मेंशन करें, सिर्फ नाम बता दें, लेकिन डोंट गिव द डिटेल जब आपसे पूछ न ले। पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो लिम्स की वीकनेस है, दूसरा जो है ना इस पेशेंट में सिर्फ लीक है, इसका एक पोर्शन जो बाहर की तरफ जा रहा है ना, ये तो अक्सर पूछते हैं कि इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो आपको वो पता होना चाहिए, इस पेशेंट में अगर बोन की इतनी बड़ी लीजन बाहर आ रही है तो देयर माइट बी इंस्टेबिलिटी ऑफ द स्पाइन। तो आपने इसमें फिक्सेशन का भी सोचना है, क्योंकि अगर आप ऊपर देखें तो दो वर्टिब्रल बॉडी फ्यूज है, यहाँ पे भी अगर आपने बहुत ज्यादा लिया और पेडिकल भी सारे गए हैं और आपको लगता है कि ये अनस्टेबल हो जाएगा, वो भी जहन में रखने हैं कि भाई मैं फिक्सेशन कर लूँ। ऑल दीज थिंग्स शुड बी इन योर माइंड। और पोस्ट ऑफ जो है सीसीएफ लीक जो उसने नहीं बताई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग में सीसीएफ लीक की चांसेस होते हैं। अगर आप देखें तो उसकी पूरा बाहर की तरफ जा रहे हैं, उसने ड्यूरा ऑलरेडी इरोडेड हो चुका होगा, तो इसमें ड्यूरल ग्राफ्ट का सोचना चाहिए। और दूसरा जो है ना, वन शुड बी वरीड अबाउट ऑन द पोस्ट ऑफ सीसीएफ लीक, ठीक है। और फिर पोस्ट ऑफ जो है ना आपसे हिस्टोपैथोलॉजी का पूछ सकते हैं, व्हाट अबाउट द पोस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो रेडियोथेरेपी वगैरह है और रिहेबिलिटेशन। जी जी सर मेरा क्वेश्चन है सर। जी बोले सर अगर एक ट्यूमर है, इसके दोनों इंट्राड्यूल और एक्सट्राड्यूल दोनों पार्ट्स हैं सर, तो हम सर्जरी में पहले कौन सा पार्ट रिमूव करेंगे, एक्सट्राड्यूल और इंट्राड्यूल?
इसमें ऐसा ना कि आपने पहले जो है ना आपने यानी मेन कंसर्न हमारा क्या है, हमारा मेन कंसर्न ये है कि हम स्पाइनल कॉर्ड को बचाएं। डिकम्प्रेस जी सर। आप स्पाइनल कॉर्ड को बचाना चाहते तो आप इंटरनल डिकम्प्रेशन कर ले और अंदर की से आप डिकम्प्रेशन शुरू कर ले ताकि कार्ड को बचा सके, क्योंकि अगर आप बाहर लगे हैं तो आप कार्ड और फर्दर कंप्रेस कर सकते हो ना, तो बेहतर यही कि आप इंटरनल डिकम्प्रेशन कर ले और अंदर से शुरू कर ले फिर बाहर की तरफ जाए। लेकिन लेकिन ये हर एक ट्यूमर जो है ना इंडिविजुअलाइज होता है, तो आपने उस ट्यूमर की साइज और उसकी कंप्रेशन के मुताबिक सोचना है कि भाई अब इसमें क्या करना चाहिए। लेकिन अमूमन जो है ना इंटरनल डिकम्प्रेशन और फिर आप कोशिश करें कि आप वो करें स्पाइनल कॉर्ड को पहले डिकम्प्रेस करें, वरना आपकी मैनिपुलेशन से भी आपका कॉर्ड डैमेज हो सकता है। जी किसी और ने कोई सवाल किया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जी सर, जैसे ये वाला केस सिनेरियोस में स्पाइनल पैथोलॉजी, तो उसके बाद जब हम लोग एग्जामिनेशन का डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो हमें ट्रेनिंग नर्स के पूरा डिटेल में बताना होगा वहाँ पे? नहीं, आप डिटेल में जाने की आपने जरूरत नहीं। ट्रेन नर्स थी तो, लेकिन आप बताएं कि पता है आपसे उक्रेन जब आप डिस्कशन शुरू करते हैं तो आपको जो है ना बीच में रोक लेते हैं। आपने एग्जामिनेशन की हो, मस्ट है पूरा एग्जामिनेशन हमने की हो, लेकिन आपने जब डिस्कशन स्टार्ट की, जब तक उसने नहीं रोका आप पहले स्पाइन पे शुरू करें, सारा बताते जाए। जब आपने स्पाइन अपनी तरफ से पूरे किए तो फिर आप बाकी सिस्टम पे चले जाए। लेकिन वो आपसे इतना नहीं पूछेगा जब तक उसमें फाइंडिंग ना हो, आपको वहां पे रोक लेते हैं कि भाई अब बताओ क्या बनता है। जब तक वो ना रोक लिया आपने सब कुछ बताना है। ठीक है। लेकिन ये स्पाइन में मैंने जितने लोगों से मैं पूछता हूँ, नो वन इज गिविंग सेटिस्फैक्टरी आंसर्स। जो मिट्स हैं, केरीज हैं, स्पाइनल ट्यूमर है और डिजेनरेटिव चेंज है, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट among them clinically on the basis of history and the basis of examination? मेरे ख्याल में जिस बंदे को इन चीज़ों पे अबूर हासिल हो जाए तो बाकी वाइवा इतना मुश्किल नहीं है। वाई में छोटी मोटी गलतियां आपकी माफ की जाती हैं, या उसके नंबर अगर ना भी दिए तो आपकी बाकी चीज़ सही की नंबर अच्छे मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपने इधर उधर गलत की तो फॉरगेट अबाउट दैट, उससे कुछ नहीं होता। असल में जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं कि आप MRI CT स्कैन को सही जस्टिफाई करिए, आपने क्लिनिकली पॉइंट्स जो 4-5 बता दिए वो सही बताए, और फिर बाद में आप ऑपरेट कर लगता है कि भाई आपने OT में टाइम गुजारा है, आप आए थे और आपको बिल्कुल एक कमांड हो। और ये जो 4-5 चीज़ें हैं, अल्ट्रासाउंड है, सियाम है, क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप है, कूजर है, मॉनिटरिंग है, आपको बिल्कुल मेंशन करनी है। और स्पाइन में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, या आप परप इन लेवल में अक्सर गलती होती है, या परप सियाम इस्तेमाल करिए या प्री आपको मार्कर एक्सरे करें, दोनों में से कोई एक जरूर कर ले। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका लेवल गलत कंसिडर किया जाएगा एग्जाम में। जी शाकिर साहब कुछ पूछना चाहते हैं, फिर हम पॉइंट अप करते इसको। सर ये जो एक्सियल कट है इसकी एनाटमी सर दिखाइए जरा। एनाटॉमी में क्या पूछना चाहते हैं सर? जो ऊपर ब्लैक डॉट नजर आ रहा है ये क्या, इसके ऊपर कौन सर? सा वाला? ये हाँ बताइए क्या वाज है वाज बताएंगे क्या है? वाच क्या है? ये वाला क्या है? मिड लाइन में है, वास्कुलर रीजन क्या हो सकता है? कॉमन आइलिक आर्टरी I- एओर्टा होगा यार, आर्टा होगा ना? मिड लाइन में आयोटा होगा क्या, और जो साइड पे होगा दैट विल बी aorta, yes sir. आयोटा। जी ठीक है, फिर ये और आपके क्या पास पूछना Yes. चाहते हैं? But sir, I was confused regarding that lesion, sir. ठीक है, सही। तो वो जो है ना मिड लाइन में वास्कुलर रीजन है, दैट इज आयोटा। ठीक है सर मैं एक Yes, चीज sir. कहना चाहता हूँ सर, ये सबसे ही कि जो है वो कोविड की वजह से मेरे ख्याल में सबका ही जो पेशेंट से जो है ना एग्जामिनेशन और सब चीज़ें बहुत पीछे चली गई है। सो सबके पास अभी मेरे ख्याल में टाइम है कि दे शुड गेट बैक टू द पेशेंट्स, और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ सकता है इन लोगों को, बिकॉज जो है कोविड की वजह से हर वार्ड के अंदर पेशेंट थे ही नहीं, तो बहुत लोगों ने देखे भी नहीं पेशेंट्स। अभी ये कि वार्ड्स में पेशेंट हैं तो आपके पास टाइम भी है, तो बेटर टू स्टार्ट सीइंग द पेशेंट्स। और दूसरी बात सर ये कि जो हमारे अच्छा नेक्स्ट जी सर जी बोलिए।
जिस समय ये कहता कि कुछ बोलिए लोग तो बोलिए एग्जाम दे रहे हैं सर, वो तो ठीक है प्रैक्टिस करेंगे, बोलिए फरूक, बोलिए लेकिन क्या बोलना चाहते हैं? जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे लोग जो यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं जनरली देयर आर 5 और उनकी जो है वो ट्रेनिंग दिसंबर में कंप्लीट होने वाली है। सो देखा जो मैंने देखा सर वो यही है कि जो है ये लोग जो है पेशेंट को देख नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ जो है वो हिस्ट्री किसी से मंगवा ली, किसी से स्कैन मंगवा लिए और पेशेंट देखे बगैर प्रेजेंट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और ना डिस्कस करते हैं किसी से। ठीक है, इसको एग्जाम में रिलैक्स होना अलग चीज़ है, लेकिन एग्जाम को हल्का लेना ये बहुत ही मतलब कि गलत बात होगी। तो ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, आप रिलैक्स तो रहें लेकिन हल्का नहीं है एग्जाम को। आपने जो है वो पेशेंट को प्रॉपर्ली असेस करना है, प्रॉपर्ली देखना है, फाइंड डिस्कस करनी है। बिकॉज हमें याद है कि हम लोग जो है वो 3-4 दिन पहले जो है ना वो पेशेंट को देख कर डिस्कस कर होते थे अपने, और मतलब जो भी सीनियर डॉक्टर अली थे उस वक्त, डॉक्टर मुनव्वर थे, इवन सर के पास भी चले जाते थे कि सर ये स्कैन में बता दें। बट मेरा नहीं ख्याल कि कोई अभी जो है करता है इस तरह से। वो डायरेक्टली ये होता है कि हम बस इसी दिन देख लेंगे, थोड़ा सा बुक से पढ़ के आ जाते हैं। ऐसा नहीं करें, क्योंकि इसमें आपके जो रिफ्लेक्सेस खराब हो जाएंगे, और रिफ्लेक्सेस को वापस सही करना बहुत मुश्किल काम है। जो आपके रिफ्लेक्सेस एक मतलब बन जाते हैं वो फिर आप उसी को लेकर चलते रहते हैं। एग्जाम के जो लास्ट 2-3 मंथ्स होते हैं उसमें आप नई चीजें ऐड नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी जो पुरानी जो चीजें होती हैं उन्हीं को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आप उसको कुछ नई स्किल्स नहीं सीख पाएंगे आखिर के टाइम के ऊपर। तो बेटर ये कि ये टाइम आपके पास है कि आप जो भी चीजें हैं वो न्यू स्किल्स हैं, न्यू डिस्कशन है, आपने उसको प्रॉपरली पेशेंट को प्रिपेयर करके फिर आप लेकर आए पेशेंट को। अच्छा ये बताएं कि ये जो वेबिनार पे हम वीडियो प्रेजेंट कर सकते हैं वीडियो? बिल्कुल सर, हो सकता है सर। तो डॉक्टर शाकिर आप नेक्स्ट लॉन्ग केस आप करना चाहते हैं? Sir, it will be quite difficult for me to arrange the patient because I'm in a नहीं ward. इसी तरह से सर कह रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं इसी तरह से अगर आप करें हम, तो वो जब पेशेंट होगा फिर हम अपने पास करेंगे। नहीं मरीज तो है नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप अगर पेशेंट पे कर ले, अपना एक वीडियो बना ले और वो प्रेजेंट कर इधर, ताकि पता चले कि भाई आप किस तरह एग्जामिनेशन कर रहे हैं, किस तरह हिस्ट्री ले रहे हैं। ये भी सही है। या वो शफ कहते हैं आप दोनों में से कोई एक कर ले। हाँ, क्या वो 30 मिनट्स की ना एक वीडियो बना लें कि उसमें आपने जो है वो हिस्ट्री एग्जामिनेशन जैसे करते थे पहले 30 मिनट्स के अंदर, तो एक कंप्लीट अगर तो आप कल करेंगे या कब करेंगे नेक्स्ट सर? मंडे को। नहीं मंडे को, अगले मंडे को इंशाल्लाह सर सर। मंडे सर इंशाल्लाह प्रिपेयर कर लेंगे, वीडियो बना लेंगे पेशेंट पे करके आप सर लोग वीडियो ऐसा बना करें लेंगे ना, इंशाल्लाह। आप लोगों वीडियो बना ले, बल्कि एक दूसरे के बना ले, पहले एक बंदा करे फिर दूसरा कर ले। जी सर। और उसमें दैट शुड बी फॉर 30 मिनट्स। 30 जी सर। मिनट्स में आपने हिस्ट्री भी लेनी है और अपने एग्जाम भी करना, पूरा एक क्रेनियल केस कर, एक स्पाइनल केस कर ले, जी और सर। फिर यहाँ पे वीडियो प्रेजेंट करें, फिर उस पर हम डिस्कशन करें। ठीक है सर। ठीक है, तो इस तरह आप दोनों ओके में सर। से कोई भी दोनों बना ले, फिर कोई एक प्रेजेंट जो भी प्रेजेंट करना चाहे। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, तो वो पहले उसकी जो है ना, यानी पेशेंट भी आपके सामने होगा, आपके वार्ड में होगा, तो वो पेशेंट पढ़ के भी आ जाए, चाहे वो सीपिंग है, जो भी चीज़ आपको पता होगा कौन सा है, तो पूरा तैयार करके आ जाए। ठीक है सर। ओके सर। तो इंशाल्लाह उस पर डिस्कशन होगी। ये कॉमन बना लिया, पिट्यूटरी या सीप एंगल या कोई कन्वेक्स मेनिंजियोमा, या स्पाइन में कोई ट्यूमर हो, सर्वाइकल हो या लंबा थोड़े से कहूँ जो भी हो, सर कोई पेशेंट देख लें और उस पर एग्जामिनेशन कर लें, देखते हैं। ठीक है, ओके ठीक है जनाब, थैंक चलो ठीक थैंक है, यू सर। थैंक यू सो मच सर। Thank you.